Welcome to the Appraiser English Educational Academy. Preposition. Preposition is a part of speech, and today we are going to discuss this part of speech in detail. Preposition is basically a combination of two words, pre and position. Pre means before and position means place. Preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship, or to introduce an object. So basically preposition क्या होता है? Preposition एक तरह का लिंकिंग वर्ड है जो लिंक करता है नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज को विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और जो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो कोई और नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। सो दो कंडीशन है कि ये इसको पहले आना चाहिए नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज से, और सेकेंडली इट मस्ट इंडिकेट्स और show a relationship. For example, if I say I go to school, so in this sentence to is the preposition. क्यों? क्योंकि ये स्कूल से पहले आया है, स्कूल इज द नाउन, और सेकेंडली ये रिलेशनशिप शो कर रहा है जो वर्ब है उसका विद द नाउन, आई गो टू स्कूल. Then let's take another example. The cat is sitting under the table. If I say the cat is sitting under the table, so in this sentence under is the preposition because it comes before a noun, that is the table. Now it's time to check out types of preposition. Prepositions are categorized into three different categories: location, direction, and time. Preposition of location or the preposition of time include in, on, and at. In, into, on, onto, to, and towards. These are the prepositions that comes under the category of preposition of direction. Next, in the preposition of time comes in, on, at, within, by, for, since, during, from, and to. These are some prepositions, and these are used according to the situation in the sentence. Now let's discuss these types of preposition in detail. First type of preposition is preposition of location or the preposition of place. Preposition of location include on, in, and at. On tells us the following noun is located on a surface. We use on when one thing is attached to or touching something. It means कि जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर होती है, उस सरफेस को टच कर रही होती है या उसके साथ अटैच होती है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो है ऑन. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द रोड, या कार इज़ ऑन द रोड, or we can say that was is on the table. So was टेबल के ऊपर है, वो उसकी सरफेस को टच कर रहा है. तो अगर सेंटेंस में कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर हो, उसको टच कर रही हो, उससे अटैच हो, तो हम वहाँ पे जो प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन यूज़ करेंगे वो होगा ऑन. नेक्स्ट इज प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन. जो नेक्स्ट है वो है इन. In tells us that the following noun is located at a specific point or location, or we can say enclosed area. Enclosed area means बंद जगह. अगर कोई noun किसी बंद जगह में, किसी enclosed area में हो
उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हो इन द सेंटेंस, तो हम जो preposition यूज़ करेंगे वो है in. It shows an exact position. For example, in a room, in the envelope, in the library. Or if I make a sentence, we can say she is in the room, or a letter is in the envelope. So envelope के अंदर letter है, inside envelope है, enclosed area में letter है. तो हम इसको explain करने के लिए जो preposition use करेंगे वो होगी in. इसी तरह इफ़ आई से शी इज़ इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी एक इनक्लोज्ड एरिया है, वो उस इनक्लोज्ड एरिया के अंदर या उस रूम के अंदर है, तो हम उसको उसके लिए जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे वो होगा इन. गॉट इट. नेक्स्ट प्रपोजिशन है एट. At tells us that the following noun is located at a specific point or location. For example, if I say he is at the door, तो मैं बता रही हूँ कि वो डोर पे खड़ा हुआ है, तो स्पेसिफिक पोजीशन स्पेसिफिक पॉइंट बता रही हूँ. इसी तरह another example is at the door, at the corridor, or at the ground. So preposition of location on, in and at यूज़ होते हैं according to the situation, according to the sentence. अगर वो सेंटेंस में सरफेस के ऊपर कोई नाउन है, उसको उसके लिए हम preposition यूज़ करेंगे on. अगर इनक्लोज्ड एरिया में नाउन है तो फिर preposition यूज़ होगी in. और अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे नाउन है तो फिर preposition यूज़ होगी. Let's discuss preposition of direction. Preposition of direction are categorized into three different categories. First one is movement to a surface. If we want to show the movement to a surface, तो हम उसके लिए जो preposition use करते हैं वो है on to. We have discussed earlier that if we want to show, or if we want to indicate that something or some noun is on the surface, we use preposition on. But what is the difference between on and on to? We can differentiate them by this main point that on to is about movement. On to कब use करेंगे? When we have to describe about the movement from one place to another. On the other hand, no कब use होगा? When there is no change of surface. You can see here, on to is the combination of two words, on and to. On, we use on when something is on the surface, and we use to describe about the movement, of the noun. So if we want to show movement, we have to add to with on. Is it clear? Let me give you some examples. He jumped onto the sofa. He jumped onto the sofa. के वो सोफे के ऊपर उसने जंप किया, तो उसकी पोजीशन पहले डिफरेंट थी, फिर उसने जंप किया onto the sofa, तो उसकी मूवमेंट शो हो रही है यहाँ पे. इफ़ आई से ही लाइज ऑन द सोफा, तो वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, ही इज जस्ट लाइंग ऑन द सोफा, तो वहाँ पे इसलिए हमने यूज़ किया प्रपोजिशन ऑन. लेट्स टेक another example. The phone is lying on the table. The phone is lying on the table. There is no movement, there is no locomotion. If I say I throw my phone onto the table, कि मैंने अपना फ़ोन थ्रो किया, अपना फ़ोन फेंका है onto the table, तो यहाँ पे मूवमेंट शो हो रही है, तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे on to. Let's take another example. I stepped on the terrace. I stepped on the terrace, कि मैं टेरेस की सरफेस के ऊपर हूँ. ठीक है. If I say that I stepped on to the terrace, तो इसका क्या मतलब हुआ कि my position was different before stepping onto the terrace, कि मेरी पहले पोजीशन डिफरेंट थी, फिर उसके बाद
मैं जब टेरेस पे आया तो पोजीशन डिफरेंट होगी, तो वहाँ पे इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑन टू की प्रपोजिशन। आई स्टेप्ड ऑन टू द टेरेस, यहाँ से शो होगा ऑन टू सजेस्ट करेगा मूवमेंट। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस another category of preposition of direction, that is movement to an enclosed area. As we have discussed, जब हमें enclosed area को की preposition यूज़ करनी होती है तो that is the in। किसी बंद जगह में कोई भी noun है उसकी पोजीशन शो करनी है तो हम यूज़ करेंगे in। लेकिन अगेन अगर हमने उस इनक्लोज्ड एरिया में मूवमेंट एक्सप्लेन करनी है तो हम यूज़ करेंगे इन टू। हम ऐड करेंगे टू को विद द इन, तो ये इन टू एक्सप्लेन करेगा मूवमेंट और द एक्शन। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। द पिज़्ज़ा वाज इन द ओवन, कि पिज़्ज़ा कहाँ पे था? ओवन में था। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए हमने शो इसमें ऐड किया preposition ऑफ इन। इफ़ आई से शी वॉज पुटिंग अ पिज़्ज़ा इन टू द ओवन, कि वो उस इनक्लोज्ड एरिया में ऑफ द ओवन वो पिज़्ज़ा रख रही है, तो इसका मतलब है कि पहले पिज़्ज़ा ओवन से बाहर था, तो फिर उसकी पोजीशन चेंज हुई है, यहाँ पे मूवमेंट शो हो रही है, तो इसलिए हमने यूज़ किया इनटू। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मम्मा इज़ कुकिंग इन द किचन, तो मम्मा किचन में कुकिंग कर रही हैं, तो यहाँ पे इन यूज़ होगा। बट इफ़ आई से मम्मा इज़ गोइंग इनटू द किचन, तो मम्मा किचन में अभी जा रही हैं, अभी वो किचन से बाहर है, अभी जा रही हैं, अभी उनकी मूवमेंट शो हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे इनटू विद द किचन। क्लियर? लेट्स टेक another एग्जांपल। अली इज़ इन द रिवर, अली रिवर के अंदर है या वाटर में है, तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, तो हमने वर्ड यूज़ किया preposition यूज़ की इन। इफ़ आई से अली इज़ जंपिंग इनटू द रिवर या अली इज़ जंपिंग इनटू द वाटर, तो इट मीन्स अली इज़ चेंजिंग हिज पोजीशन फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड वाटर। गॉट इट? Now moves toward the next category of preposition, that is movement to a destination. इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं towards। If something is going towards the box and something is on the way to box, तो यहाँ पे towards और to इनका यूजेज डिफरेंट तरीके से हुआ है। इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन द मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वी यूज टू or towards according to the situation. For example, if I say he is going to his office, he is going to his ऑफिस, वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा है, तो मैंने वर्ड इस पे प्रपोजिशन यूज करनी है टू। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर जो पोजीशन है या पर्टिकुलर प्लेस है वो मेंशन है। इफ़ आई से ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स हिज ऑफिस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑफिस की तरफ जा रहा है, ऑफिस में नहीं जा रहा। वो मे बी ऑफिस से पहले किसी स्पॉट पे स्टे कर जाए, वहाँ पे रुक जाए, तो वो ऑफिस के अंदर नहीं जा रहा बल्कि ऑफिस की तरफ जा रहा है, उसके वे की तरफ जा रहा है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन शो करने के लिए टू वर्ड्स लगाना है। क्लियर? लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट preposition, that is preposition of time. Preposition of time include at, in, on, during, for, since, before, by or from. At is used in reference to specific time on the clock or point of time in the day. At कब यूज़ होता है? जब हमने कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है या फिर डे का कोई स्पेसिफिक टाइम बताना होता है, तो तब हम यूज़ करते हैं at. For example, if I say that it's cold at night,
Then in when we use in usually refers to period of time, and on is used with dates and days of the week. For example, my vacation ends on Monday, or my birthday fall in January. Next is during. During is used to say when something happens, and for is used to say how long it lasts, and use since to reckon from a particular point of time. जब particular point of time explain करना होगा तो हम use करेंगे since. For example, since 1947. Then by. By means before a specific time. By shows a time limit for something to happen, कि उस जो काम हो रहा है उस time limit से पहले. Until is describe a continuous action that stops at a specific time. Hope this video will be useful for you. Thanks for watching.